Hello and welcome to your SST class again. So students, let's explore our unfinished portion, chapter number 2 of geography, latitudes and longitudes. We have already discussed this topic in our first part of the video. Today we will be winding up the explanation in this particular part. We will try to complete the chapter. Okay, so in the previous video we have learned about latitudes and we have also discussed up to a far extent about longitudes. लेट्स सी हाउ दिस लॉन्गिट्यूड्स आर डिवाइडेड. ये किस तरह से हमारी अर्थ सरफेस को एनसर्कल करती हैं, इनका ग्रेडियंट क्या है, हाउ मच दे आर इन नंबर और किस तरह से ये किस डायरेक्शन में रन करती हैं. सो लेट्स सी, आई हैव जस्ट ड्रॉन अ रफ स्केच ऑफ द ग्लोब. इट्स लाइक अ सर्कल ऑफ कोर्स, जैसे हमारी अर्थ की शेप है. द सेंट्रल लाइन जो इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये जो लाइन अप से बॉटम में आ रही है, द सेंट्रल लाइन दैट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. ओके, दिस लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन दैट डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. वर्टिकली, ये वर्टिकली हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. ओके, सो दीज लाइंस, व्हेन वी ड्रॉ दिस लाइंस वर्टिकली like this, we draw these lines are being separated by a distance of 10 degree. इन लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 डिग्रीज का है. 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री. सेम वे दिस साइड 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, एंड दीज लाइन्स आर अप टू 180 डिग्री. द लास्ट डिग्री ऑफ दिस लाइन इज 180 डिग्री. ओके, सेकेंड थिंग, जैसे जैसे वी मूव टू दिस साइड, वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, these lines are written as the direction of west. We write them as 10 degree west, 20 degree west, 30 degree west, 40 degree west, and so on up to 180 degree west. और जैसे जैसे we move in the right hand side direction, we of course write according to the direction 10 degree east, 20 degree east, 30 degree east, 180 degree east. So this is the form of writing the prime meridian. इस तरह से हम इसको लिखते हैं. Okay, the way we write down. Now let's talk about something, what actually the benefit we derive from these lines, how the measurement of time is connected with these lines. Okay, with this longitudes. The actual common purpose of longitude for our life is calculation of standard time. हम लोग longitude की हेल्प से टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ द टाइम रिमेन्स यूनिफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब. इस पूरे वर्ल्ड के सभी डायरेक्शंस में एक यूनिफॉर्म टाइम कैसे मेजर किया जाता है. लेट्स सी इफ वी, दिस इज अ रफ स्केच ऑफ अ वर्ल्ड मैप व्हिच आई हैव ड्रॉन फॉर यू. इट्स नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज साउथ अमेरिका. ओके, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया, दिस वन इज अफ्रीका, this one is combined Europe and Asia. Okay, so if we divide the earth, if we take a division of this world map, there's a place near London, that is Greenwich. We take the longitude of Greenwich as a standard meridian for measuring the time. हम लोग ग्रीनविच की प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड है उसको मेन स्टैंडर्ड टाइम के रेफरेंस के लिए यूज करते हैं. हाउ डज इट वर्क? सी, इफ सपोज ग्रीनविच इज लोकेटेड समवेयर हियर. ओके, ग्रीनविच इज लोकेटेड समवेयर हियर, तो दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम टेकन. तो जो कंट्रीज, जो कंटिनेंट्स, जो प्लेसेस दैट विल बी ahead of this longitude, their time will be ahead of Greenwich. Like for example, if suppose there is 12 noon in Greenwich, it's 12 noon in Greenwich, then the countries which are ahead of Greenwich, their time will be somewhat like 1 pm, 2 pm, 3 pm. यानी अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो अदर कंट्रीज में टाइम विल इंक्रीज maybe by 1 hour, 2 hour, 3 hour, and the maximum increase will be up to 12 hours. 12 hours से ज़्यादा increase नहीं होगा. If we go back, if we go to back side North America and South America, this time will decrease. Okay, if suppose there is 12 noon at Greenwich, अगर दोपहर के 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, तो these countries will have a time of maybe 11 am, 10 am, 9 am, 8 am, this way. Means अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे with respect to the Greenwich, the time will decrease. अगर आप इस रेस्पेक्ट में चलेंगे द टाइम विल इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू द ग्रीनविच. यानी कि ग्रीनविच में जो भी टाइम होगा उससे
प्लस में इन कंट्रीज और कंटिनेंट्स का टाइम होगा, और उससे माइनस में इस इन कंट्रीज और कंटिनेंट्स का टाइम होगा. सो दिस लाइन पासेस थ्रू ग्रीनविच एंड दिस टाइम स्पैन इंक्रीजेस. अब नाउ लेट्स सी कि हाउ द टाइम ऑफ इंडिया या हाउ द टाइम ऑफ अदर कंट्री इज अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ ग्रीनविच. लेट्स सी. See, as I have told you, कि this longitude are having a separation of 10 degree each. So how do we calculate? How can we connect this longitudinal degree with the clock time? Try to understand. See, dear students, if two places are having a difference of, let's suppose 1 degree, अगर दो places uh, एक डिग्री के डिफरेंस पर हैं, सपोज वन प्लेस इज एट 18 डिग्री वेस्ट एंड अनदर प्लेस इज लेट्स सपोज 19 डिग्री वेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री. ओके, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइम? सपोज कीजिए यहाँ पर टाइम है 2 p.m. तो इस प्लेस पर टाइम क्या होगा? हाउ विल यू फाइंड? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच? 19 minus 18, 1 degree. We will multiply this 1 degree with 4. The answer will be 4 only, 4 minutes. यानी इन दोनों places के बीच में the difference of the time will be 4 minutes. This is how we calculate the time with respect to the Greenwich time. अब if we assume our Earth's India location, India is located somewhere, somewhat here. It's 82 and a half degree, 82 and a half degree east from Greenwich. Our India is 82 and a half degree away in east direction from Greenwich. तो हम क्या करते हैं? What we do is we multiply this 82 and a half degree with 4 and we get the answer as 330 minutes. That means the time of India is 330 minutes ahead from Greenwich. 330 means 5.5 hour. हमारा जो टाइम है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज means Indian time is 5.5 hour ahead of Greenwich time. If it's 12 noon in Greenwich, then in India it will be evening 5:30. It will be 5:30 p.m. I hope you have understood whatever has been discussed till now in this portion of video. In the same video, in the next page, I will be just moving to a different heading. In the same video, we will discuss about Indian Standard Time. So keep watching the video and try to understand कि how do we calculate Indian Standard Time, because reason is, see, like our earth is very vast, हमारी world बहुत बड़ी है, it's huge in size. Same way as our country is also not small, our country is also very huge in size. So same problem comes in the standardization of time in India also. अलग अलग places के longitudinal variations हैं. Some places are at a different longitude, some places are at a different longitude. So we assume one standard timing system. जैसे हमने वर्ल्ड के टाइमिंग में ग्रीनविच को रेफरेंस लिया है, ऐसे ही फॉर इंडिया वी हैव टेकन वन प्लेस फॉर द रेफरेंस. लेट्स सी विच इज दैट प्लेस. Okay, now dear children, we are on the final topic of this chapter, that is Indian Standard Time, yeah, Standard Time as it is written in your book. What I have just is I have drawn a rough sketch of a country India. It's figure number 2.9 drawn in your book. See student, if you see closely, the longitudinal extent of India is from 68 degree east to 97 degree east. यानी हमारी जो कंट्री इंडिया है उसकी अगर हम longitudinal stretch देखें तो हमारी इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक स्प्रेड है. ओके, इसकी जो बाउंड्री है वो 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री ईस्ट तक जाती है. इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिग्री, इट कम्स 97 माइनस 68, दैट इज 31 डिग्री. यानी कि पूरी इंडिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 31 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ जाता है. और व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन माय जस्ट प्रीवियस पार्ट कि 31 डिग्री, इफ यू मल्टीप्लाई 31 डिग्री विथ 4, इट विल कम 124. यानी कि इंडिया की इस प्लेस में और इस प्लेस में 124 मिनट्स यानी कि 2 आवर 4 मिनट्स का डिफरेंस हो सकता है इफ वी डोंट टेक अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया. So in order to avoid such confusion, what we do is we take one place time as a standard time for India. 82.5 degree east longitude passes through India from this place as it is shown in your book. Somewhere it goes from town of Allahabad, near Allahabad, and this longitude we take as a Indian standard time. और इसके रेफरेंस से हम पूरी इंडिया के टाइम को मेजर करते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम दैट इज बीइंग टेकन. अदरवाइज इंडिया विल ऑल्सो हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइम. अगर ऐसा नहीं होगा तो J&K will have a separate time, Tamil Nadu will have a separate time, Gujarat will have a separate time,
and Arunachal Pradesh will have a separate time. But we have taken a standard longitude at 82.5 degrees. That's why we have a common time for entire country. I hope you would have understood the topic well. If at all, I will try to improve much and more better. I will make more better videos so that you can understand these topics in the future. That's it for today, my dear children. Thank you for watching the video. Jai Hind.